കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിവിധി ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു തരത്തിലും വൈറസിനെ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തില്ല എന്നും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ എന്നും വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈറസിനെ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ മറികടക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇത് സർക്കാരിനുള്ള തന്റെ ഉപദേശമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നമസ്കാർ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत. I'd like to welcome all my friends for this Zoom press conference, probably at least the first time I'm doing one. I'm going to be making some remarks today, and they should be taken in the spirit not of criticism, but of constructive support and advice. We are in a very serious situation, that is clear, and I think all political parties have to work together, and the people of India have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus. Please feel free to ask your questions. दोस्तों, मैं एजेंसीज के से शुरू करूंगा और फिर बारी बारी से बाकी के दोस्तों से मैं पूछता जाऊंगा. आप सबके सवाल हमने नोट कर लिए हैं. आई एम स्टार्टिंग विद श्री संजीव चोपड़ा ऑफ द पीटीआई. संजीव जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन. श्री संजीव चोपड़ा जी फ्रॉम पीटीआई. Yeah, Rahul ji, morning. Morning. You. I can't see you though. It's Sanjeev ji, let me see if I can work this out. So the number is because large, so although everybody's name is appearing, But normally the image comes, but it's not coming. because Sanjeev Chopra ji, I found you. yeah. Rahul ji, you've said that India is nowhere in the game as far as testing for COVID is concerned. What do you have to say on the response of the government on testing so far? And do you also suggest a joint panel of leaders, as you rightly said, that all parties and people have to get together to fight this, or of parliamentarians to suggest the way forward on issues relating to COVID response, both on the social and economic level? See, in order to answer your question on testing, I'll have to go into a bit more detail about the current situation. Before I start, I'd like to say that over the last couple of months, I've been speaking to large numbers of experts in India, abroad, in government, outside government, who have a very good understanding of what is going on. So a lot of what I'm going to be saying is going to be based on these conversations. Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources, to ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately
an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is, if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing, and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing, and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. Use testing not simply to track patients who are infected, but to create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently, the testing levels are too low and they're not using testing strategically. कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है. तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो. और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें. प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है. जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में. इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं. हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं. जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं. तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए. टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है. तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं. जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया. अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा. मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें. न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें. आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई. नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है. तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए. रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए. जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए. चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए. उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए. तो ये डायरेक्शन की जरूरत है.
ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഓഫ് ലവ്. തേമ്പാട്ടിൽ ജ്വല്ലറി, തിരൂർ, കോട്ടയ്ക്കൽ, പുത്തനത്താണി.